The Twitterati. The Twitteratis, the X's. मैं बोल नहीं रहा था अब क्या The होगा? Will it be the Xerati? No, it will be the X's. The X's. Yeah. Let's not talk about X's. Exactly. Now the name has become like something that we don't want to mention. X's. Yeah. Anyway, so to start with, Are you okay? a very very easy question. Emotional अत्याचार फिर से आ तो नहीं रहा बाहर. But before we go into the World Cup, we have some quiz. Let me check. How well do you know the teams that are going to play in this World Cup? So लगा कि So warm up कर लेते. So हाँ. who has scored the maximum number of runs in T20 World Cup? Warm up question भाई, quiz नहीं है. In like one T20 World Cup or overall? Overall, विराट कोहली. correct. Oof. वो ही लगा Who has taken the maximum number of wickets? शाकिब बोला मेरे को पता है बस कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन गया था to look at the squads विकिपीडिया पे जाकर स्क्वाड पे उधर गया तो T20 होगा सर ये सब मोस्ट विकेट शाकिब बोला सर अरे फक तो बोल This is called random luck, Yeah. which is also something that you need in T20 World Cups. इतना बांग्लादेश को गाली दिया टॉप विकेट टेकर उनका ही फिर भी नहीं जीते इसीलिए ना वो अकेला रन भी खेलता तो है. बनाने पड़ते हैं He is ना. the only player who plays, and he's still playing. That other day I watched a match they were playing against US. He was the only player who was trying to do something, but that was not enough. Which T20 winning World Cup team? Okay, someone who's won the T20 World Cup Thanks. has the best win percentage in the World Cup. I'll give you 4 options. I'll give you 4 options. ज़्यादा लोग जीते हैं, but 4 options. India, England, Australia और वेस्ट इंडीज. सोचो कौन कितनी देर तक खेला है, कौन कितना कंसिस्टेंट है. So these are the 4 teams. इनमें से किसी का तो विन परसेंटेज. West Indies. आई थिंक इंडिया West Indies. तो See, एक छोटा टीम है जो खेल रहा है जिसका नाम मेरे को याद नहीं है, पर उसका विन परसेंटेज ज्यादा होगा वर्ल्ड कप बिकॉज़ वो कुछ 3 मैच खेला होगा. बट इसीलिए ये अमंग द बिग टीम्स. मैं तो इंडिया हो West Indies. Why do you think it's West Indies? Because they won it twice. Exactly. It's wrong. It's the wrong answer. हाँ. The correct answer is India. What? अगर हम लोग का आदत है ना फाइनल पहुंच We've been consistent. We won it once. We've reached the finals again against Sri Lanka. We lost, and then we've reached the तो semi-finals. मतलब यार विंडीज भी तो जीत के पहुंचे होंगे ना. But How काफी did- विन परसेंटेज ज्यादा है ना. हम लोग Fine, हारे yeah. कम है, but हम लोग हारे जब भी है वो Thanks बहुत for ही. nothing. So you get 1 point. You're 0. Right ए, now. मैंने विराट कोहली से एक तो दिया था. वो warm up अच्छा था. वो warm up. अभी और वार्म वहाँ अप पे इंडिया ऐसे भी बांग्लादेश हुआ को था. होना है, तो उसमें जीत के कुछ फायदा नहीं होता. ओके, ये आउट ऑफ ऑल द 20 टीम्स, हाँ. which team has the maximum number of all-rounders? And the options are A. Uganda, B. Canada, दैट्स माय टीम C. Nepal, or D. New Zealand. Oof. Uganda, Canada, Nepal, or New Zealand. Who has the All-rounders. most number of all-rounders? Is this like most number of Now, all-rounders? now in the you won't call tournament or Virat not Kohli an all-round? all-rounder even if he's bowled. हाँ, exactly, of course. प्रॉपर She's asking as if she knows every person हाँ. from Uganda, अभी बोले every player from Uganda. हाँ ये You 5 have लोग no तो थे idea. Honestly, you don't know. तुम मैं अपना बोलूँगा- पोस्टर पहले संभाल लो. मैं आई विल गो फॉर युगांडा इसका अफ्रीकन बायस शुरू हो गया. I want to say Canada. Why? Because तुम्हारा सरदार वाइस चालू हो गया Of है. course, why not? He's moving with his biases. I'm moving with mine. पापा कनाडा तो है गया. No, not really, but. The correct answer is Canada. ओह क्या बात है 8. But they are the most number of all-rounders in the entire Entire tournament. squad. स्क्वाड में Yeah, on the 20 teams that we have. बाकी जो 3 names मैंने mention के 7 हैं each. So close no enough. it's not far Yeah. One would think Australia, England, you know. How many does India have? 4. Shivam Dube, if he Pandya. can. Shivam Dube, Shivam Pandya, Dube, Akshar Patel, and Ravindra Jadeja. Jadeja. 4. Yeah, 4. 4 है Which team? One sec. Question for everyone watching this. Who's the most overrated all-rounder in cricket in present times? Answer in the comments below. हाँ let them answer हाँ, of course. In- सारी in- controversy in- हम थोड़ी in आपस IPL में match dialogue में. करेंगे. England has the best strike rate, ठीक है? Okay. In the T20 बैस बॉल
So who has the second best strike rate? The four options are A. Scotland, B. West Indies, C. Australia, or D. South Africa. Scotland, West Indies, Australia, or South Africa. World Cup, in the World Cup. T20 T20 World World Cup. Cup. I want to say Windies, but I'm Yeah, stuck with maybe them on the ball. maybe West Indies is so tough, but then it's like that's too obvious because सब लोग ही चोकते हैं. चलो go for it. क्या करो. करना अपना पॉइंट स्प्लिट नहीं हो रहे. बट वो ये ना कि स्कॉटलैंड कम मैच भी खेला तो आई थिंक मैं स्कॉटलैंड बोलूंगा बिकॉज आई फील कि वो लोग वेस्ट इंडीज से कम मैचेस खेले होंगे ना तो ज़्यादा चांस है उसका हायर होने का. तो छाप मत मेरा जवाब तो वेस्ट इंडीज You मैं can get- बिल्कुल दोनों भी same नहीं answer ले सकते हो, चाहूंगा. ऐसा कुछ नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ वेस्ट इंडीज में मैं बोलूंगा साउथ अफ्रीका. बट एक्चुअली मैं बोलूंगा वेस्ट इंडीज. So final answer क्या है? स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज. The correct answer is West Indies. अरे यार मैं भी वही सोच रहा था. स्कॉटलैंड का सबसे लोएस्ट है. पहले सही आंसर से गलत आंसर पे Thanks चला for गया. nothing. ऑस्ट्रेलिया काफी क्लोज है वेस्ट इंडीज के. वेस्ट इंडीज का अराउंड 1. आपको ज़्यादा कन्वेंशन विजडम में भी वही वेस्ट इंडीज हाँ, में ना, वो वही. लोग सब तो चोकते हैं फिर मैं कहा नहीं यार इतना ऑब्वियस सवाल नहीं पूछेगा यार भी. मेरे को भी वही लगा था इसलिए मैंने इसीलिए बोला सेकंड बेस्ट पूछा ना बिकॉज़ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को डाल देते तो बहुत टफ हो But जाता. हाँ, but England is the highest you see, which is impressive. Yeah. ना तो बैट्सबॉल. अभी इंडिया का नाम नहीं ले रहे थे हम लोग इतने टाइम से. किधर है स्ट्राइक रेट? बस सबसे बेस्ट बैटिंग एवरेज इंडिया का. Not surprising. तो आते हैं बैटिंग एवरेज पे. तो ऑब्वियसली ये बैटिंग एवरेज जो है दिस हैज बीन कैलकुलेटेड. ऑब्वियसली इसे वर्ल्ड कप नहीं हो सकता बिकॉज़ वी हैव बैट्समैन जो वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं. हाँ. एंड व्हेन आई से बैटिंग एवरेज, ये बैटिंग एवरेज उन्हीं लोगों का है जो बैट्समैन है, विकेट कीपर है और ऑलराउंडर्स है. ठीक है. बॉलर्स का बैटिंग एवरेज नहीं कैलकुलेट किया गया. Makes sense. Okay, so India has the second best batting average. Okay. Who has the best batting average? Amongst Options all दे. 20 teams. ऑप्शन तो दे. West Indies, ये लोग होते ही हैं. तो है ही obviously. Australia, Canada, न्यूजीलैंड तो भाई ऐसा आते जाते उसका किसी को नहीं पता कि क्या करना है. तूने बोला था this is overall ना? Overall. Australia. ऑस्ट्रेलिया और कौन बोला? West Indies, Canada, न्यूजीलैंड. मतलब बैटिंग एवरेजेस ऑफ टीम्स इंडिया का सेकंड बेस्ट सबसे बेस्ट किसका है? बैटिंग एवरेज T20s में. ठीक है. I'm actually reconsidering. बहुत कम समय है. This is only in T20s. ऑस्ट्रेलिया. मैंने भी ऑस्ट्रेलिया बोला था, but मैं सोच रहा हूँ शायद कैनेडा because they played so less. T20s के उन्होंने- वर्ल्ड कप का नहीं है, World Cup, सिर्फ सिर्फ T20s ना. यू गेटिंग इनटू T20s बैटिंग एवरेज. चल ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया. तरफ रॉन्ग, इट्स कैनेडा. ओह देखा, because खेले इतना कम है. Why are you confusing? So we can be happy. Why See, we would can you be happy. Amongst the big teams, India का सबसे best batting That's average. what So I'm imagine if you have a good strike rate. वही तो. And imagine if we're able Point of contention to होता है. withstand mental pressure. थोड़ा bowling पे आता है. ठीक है. अच्छा ठीक है. So first of all, ये economy जो आता है ना, for our US people in US, you have no idea what is an economy rate of a एक बात bowler. बता, आधा चीज हम लोग ने हिंदी में बोला, वो इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंट समझाएगा. कौन सुन रहा है जो जिसको समझ में आ रहा है. Doesn't matter. जो देख रहा है वो अपने आप देखेगा. ठीक है. बोलो. हाँ ठीक है. What is an What? economy rate? Economy rate. So basically, with bowling, all the numbers, rule of thumb, that all the numbers should be low. So economy rate means the number of runs conceded per over. One over has 6 balls. So how many runs do you concede in those 6 balls? So the lower the number of runs, the better the economy rate. ठीक है? So economy जितना low उतना अच्छा है. Exactly. Yeah. As opposed to normal convention, like you know how you would think, "Acha, you knew this. This was for, like we said, the American मैं भी जनता." NRI हूँ ना, मैं भी बाहर से आता हूँ. अच्छा ऐसा है Oh क्या? yeah. So the 4 options are who has the best bowling? Best economy. Yeah. Okay. India, Okay. Australia, तुम लोग का फेवरेट जो तुम लोग के हिसाब से बेस्ट टीम है बिकॉज़ हर आंसर तो तुम ऑस्ट्रेलिया देते हो. Mm-hmm. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान उनका बॉलिंग. Yeah, ना, even I was उनके just thinking. spinners ऐसे ना, and spinners are tough to play in T20. But it also depends on where the World Cup. Also, they have a lot of all-rounders. I've also realized that this guy tries to fool us. मैं अच्छा वो पहले पता कैमरा नहीं. बोल रहा था पिछले इससे मैं आंसर अपने आप को में. ट्रस्ट कर रहा हूँ. जबरदस्ती मैं सच से बोलता हूँ. मैं सच की तरफ. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड, अफगानिस्तान। तो देश मेरे या बाकी तीनों में से? मैं तो अफगानिस्तान। Afghanistan. 7.42। इंडिया का खराब नहीं है, इंडिया का 7.78। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर एक्सपेंसिव। हाँ. इंडिया का पूरा सब घूमना A क्या? little above 8. A little above 8. But- But that's not a massive difference. हाँ. It can be a lot of. हाँ. I mean, I know, but I'm just saying, so it's not like it's 10 point something. नहीं, वो तो फिर then you won't be playing T20 World Cup. हाँ. 10 तो बहुत हो गया। Strike rate क्या है? Bowling strike. What is bowling strike rate? So strike rate is the number of balls that have to be bowled before a wicket is taken. So if I'm a bowler and I bowl, let's say 13 balls, and then I take a wicket, so then that becomes my strike rate. I mean, the mathematical formula is different, but then that's really just laying it out. So which Yeah. team has the best strike rate? ठीक है, bowling strike rate. India, Australia, South Africa, or Netherlands. Okay. This is very complicated now. This is also again going to be only in the T20 format, right? So you have to think which team has the best strike bowlers. Oh, I already know Which ones? Like wicket Again, takers, wicket India, takers. India, India, Australia. So Netherlands, South Africa. I already know my answer. तुम्हें से तुम बोलो पहले. Oh, अच्छा ऐसे वाला. Oh, अच्छा. Strike bowler. Casting aspersions on me that I'm stealing his answer. They can be expensive or they can be economical, but the But strike they- bowler, which team has? So I think then only they might even lose the match, but they take a lot of wickets. India, Australia, Netherlands, South Africa. I'm gonna say South Africa just because. Australia. Please, yeah, don't be so boring, yeah. South Africa is the right answer. Oh, yeah! I just Someone have a will feeling. 17.86. India has a better strike rate than Australia. 19. Damn. Australia is in fact 20.4, which is Netherlands have a better strike rate, but you also know the teams that have played against more. Which is why that So- was so- my biggest point of concern, that Netherlands hasn't once again played as much cricket, and that itself, means that the mathematics they've might be played, but working not in their against favour. bigger teams as much as these teams have played. तो वही ना, which is why the maths can get skewed. Okay, moving on. Hmm. Please explain what is bowling. आज बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्राइक रेट और bowling एवरेज में फर्क क्या है. What is So bowling bowling average. So guys, strike rate has always got to do with the balls, and averages always have got to do with the runs. So bowling average is the number of runs that are conceded before the bowler manages to get a wicket. So ये मेरे for को पता था. instance, हाँ, that's हाँ, the point. Average so has got to do exactly. with runs. See, Yeah. how old were you when you came to know what bowling average means? I mean, that's for you to answer. So basically, it could be that a 31. that a bowler has bowled 3 balls, has conceded, let's say, 6 runs on all 3 balls. Okay, so it's like 18 runs he's conceded, but then he gets a wicket. So you've got a different strike rate and a different average. आज समझा. आज जाके मैं बताऊंगा लोगों की bowling average क्या है. रास्ते में रुक के बोलूंगा कि excuse me, अगर मेरा क्रिकेट देखते हो. मेरा उम्मीद ही क्या बुक किया है मैंने. बीच में अलग ही plug in चल रहा है. थोड़ा लेट है, थोड़ा पहले करना चाहिए ना, प्लीज वोट करके. बट एनीवे, तो लोगों को रुका कि हम लोग बोलेंगे आपको बॉलिंग एवरेज पता है? नहीं, वो छोड़ो, आपके हार्दिक पांड्या की रोहित शर्मा कैप्टन होने चाहिए. बॉलिंग एवरेज क्या है वो बताओ. फिर बात करो कि क्या बॉलिंग और ऑलराउंडर के बारे में. You know? Anyway, so which team has the best bowling average? When I say bowling average, we've considered all-rounders and bowlers. Of course, हाँ. ठीक है, रोहित शर्मा का एक विकेट लिया तो वो कंसिडर नहीं होगा Hmm. because he's not considered as an all-rounder. Hmm. So the 4 options are, मैं big teams का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, छोटे टीम्स का नहीं ले रहा. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये दो तो होनी चाहिए, इनके बिना वर्ल्ड कप अधूरा है. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड. अबे I kept waiting for a माना है कि नहीं? This could be a top 4. Australia, England, West Indies, and India. who has the best average? I'll go for England. I was thinking the same thing, but now I won't say it because you're going to be like, oh, because you said it first. Imagine, source of income runs. I'll say India.
Even after they lost that semi-final against England, when जब ये एक भी विकेट नहीं लिया और इंग्लैंड 180 कुछ चेस कर See, लिया that's not- I mean, there's I think this India का guarantee. bowling average उधर बहुत खराब हो गया था. So India is not the answer. England is the answer. Please, yeah, can you stop answering before me? मैं तो Because guess मारा मैं तो मैं भी वही जा रही हूँ. पता था See England come England. what I'm realizing is Australia has abysmal bowling. Not really. I mean, not Like, abysmal they're good bowling, in but everything. like उनका balance है, उनका हाँ. balance है, balance उनका balance है. ऑस्ट्रेलिया हर चीज में अच्छा है ना, इट्स लाइक दिस. flatlining. हाँ, ऐसा नहीं कि कोई चीज में No ऐसा excitement. करूँ, ऐसा They, No, they really peak during crucial हाँ. crucial moments. Please, Clutch- let's not talk about clutch team. let's not talk about peaking. It again reminds me of Glenn Maxwell and how he's going to fucking come here and perform now after not performing for a single ball all through IPL. So this was our T20 quiz. So please watch. So who's won? एक्सेंट क्यों आ गया? पता नहीं, but जीता कौन? Full watch, ऐसा मुंह है फुट टेढ़ा बड़ा हो गया आदमी का. Full watch. Because this is how Indians speak when they go to US. Yeah. After they've returned from US, this is how अबे they तो speak. अभी तो I want to ask Abhijit Sood, where does his accent come from? ये तो पापा को भी नहीं पता है.